Everyone, welcome to Literary Insight. In this video here, I'm talking about Jane Austen's biography and her works. All right, so let's start with its introduction. In the first point, Jane Austen was one of the greatest English novelists. She described that how she was one of the greatest English novelists, कि किस तरीके से वो एक greatest English novelist रही थी. All right. So let's come to the second point of introduction. She is famous for her realistic portrayal of everyday life. उनके जो realistic portrait थे वो उनकी everyday life में बहुत ज़्यादा famous थे. And sharp wit. So what is, guys, what is a sharp wit? Sharp wit का क्या meaning होता है? What is the meaning of sharp wit? Possessing a highly intelligent. वो highly intelligent थी. All right. And insightful observations of society. इंसाइटफुल ऑब्जर्वेशंस ऑफ सोसाइटी का क्या मतलब है कि डीप किसी चीज के ऊपर डीप ऑब्जर्वेशन करना. ऑलराइट. एंड सेकंड मीनिंग इसका ये है क्लेवर रिमार्क्स अबाउट हाउ पीपल लिव एंड एक्ट टुगेदर. कि क्लेवर रिमार्क्स, ठीक है, कि किस तरीके से लोग रहेंगे और एक्ट करेंगे एक साथ. ऑलराइट. So let's come to the third point of introduction. Her novels mainly explore themes of love, marriage, family, and social class. All right. So let's come to the fourth point. Although she lived over 200 years ago, her works remain widely read and admired around the world. उनके जो works थे ना, वो पढ़े जाते थे and admired थे around the world. Okay. So let's come to its biography. So let's begin with the first point of biography. Jane Austen was born on 16 December 1775 in Steventon. Okay, Jane Austen का born कब हुआ था? 16 दिसंबर को हुआ था 1775 में, जो कि Steventon में हुआ था. All right. Let's come to the second point of biography. She was the seventh of 8 children. ठीक है, वो 8 बच्चों में से, वो अपने पेरेंट्स की 8 चिल्ड्रन में से 7th गर्ल चाइल्ड थी. ऑलराइट. एंड उनके फादर का नेम क्या था? जॉर्ज ऑस्टन. Her father name was George Austen, who was a clergyman, and her mother name was Cassandra Austen. All right, let's come to the third point of biography. She received much of her education at home. उन्होंने अपनी एजुकेशन से बहुत कुछ रिसीव करा है घर बैठे बैठे. Where she developed a love of reading and writing. जहां पर उन्होंने डेवलप करा है प्यार अपनी रीडिंग एंड राइटिंग के लिए. All right, let's come to the fourth point. Austen began writing stories as a teenager. Austen ने stories teenage में ही लिखना शुरू कर दिया था. All right. Although, let's come to the fifth point. Although she completed several novels, उन्होंने several novels complete करी थी early life में. All right. Let's come to the sixth point. It was difficult for women writers to gain recognition at that time. ये बहुत डिफिकल्ट है वुमेन राइटर्स के लिए रिकॉग्निशन गेन करना, वो भी उस टाइम पर. Alright, let's come to the seventh point of biography. Her first published novel, which is Sense and Sensibility, appeared anonymously with the author identified only as by a lady. ये जो उनकी फर्स्ट पब्लिश नॉवल थी ना, जो कि सेंस एंड सेंसिबिलिटी थी, वो अपीयर हुई थी अनोनिमसली. किस ऑथर द्वारा? एक लेडी ऑथर द्वारा आइडेंटिफाइड किया गया था इसको. ठीक है. Let's come to the eighth point. This was followed by several successful novels that established her reputation. ये followed करा गया था several successful novels से, जो कि उनकी reputation को established करता है. All right. Let's come to the ninth point of biography. Jane Austen never married. Jane Austen ने कभी शादी नहीं करी थी, but her understanding of relationships and human nature gave depth to her fiction. जेन ऑस्टन ने कभी शादी नहीं करी थी, बट जो उनकी अंडरस्टैंडिंग थी रिलेशनशिप्स को लेकर एंड ह्यूमन नेचर के लिए, वो उनकी फिक्शन को डेप्थ देती थी. ऑलराइट. सो लेट्स कम टू द 10th पॉइंट. She spent her final years in Churton.
and died on 18th July 1817 in Windsor at the age of 41. उन्होंने अपने फाइनल ईयर्स टॉटन में स्पेंड करी थी एंड उनकी डेथ कब हो गई थी 18 जुलाई 1817 में, वो भी विंस्टर सिटी में एट द एज ऑफ 41, जब वो 41 ईयर्स की थी. ऑलराइट, सो लेट्स कम टू द 11th पॉइंट. शी वाज ब्यूरिड इन विंस्टर कैथेड्रल. सो ब्यूरिड मींस टू पुट अ डेड बॉडी इन द ग्राउंड, मतलब डेड बॉडी को दफनाना. ब्यूरिड का मीनिंग है डेड बॉडी को किसी ग्राउंड में दफनाना. All right, so let's come to its major works. Jane Austen wrote 6 completed novels. Jane Austen अभी तक अपनी 6 novels को complete कर चुकी थी. लिखना complete उन्होंने कर दिया था. So let's begin with the first point of major works, which is Sense and Sensibility. It was written in 1811. It is a story about द डैशवुड सिस्टर्स. ये एक स्टोरी है जो कि डैशवुड सिस्टर्स के बारे में है. दैट कंट्रास्ट रीजन एंड इमोशन इन लव एंड लाइफ, जो कि कंट्रास्ट करता है रीजन को एंड इमोशन को, किसमें, प्यार में एंड लाइफ में. ऑलराइट, लेट्स कम टू द सेकंड पॉइंट ऑफ मेजर वर्क्स, which is Pride and Prejudice, was written in 1813. Alright, हर मोस्ट फेमस नॉवल, उनकी जो बहुत फेमस नॉवल है, वो फोकस कर रही है रिलेशनशिप में, रिलेशनशिप के बीच, रिलेशनशिप किसके बीच के रिलेशनशिप को, एलिजाबेथ बैनेट एंड फिट्ज विलियम डार्सी के रिलेशनशिप के बीच में. वाइल एक्सप्लोरिंग, जब वो एक्सप्लोर कर रहे थे, फर्स्टली प्राइड, सेकेंडली प्रेजुडाइज एंड थर्डली सोशल एक्सपेक्टेशंस. ऑलराइट, सो लेट्स कम टू द थर्ड पॉइंट. Mansfield Park, which was written in 1814, a novel about firstly morality, secondly family, and thirdly personal growth. Okay, this novel is all about morality, family, and personal growth, and it was written in 1814. All right, let's come to the fourth point. Emma. Emma was written in 1815. The story of Emma Woodhouse. So the story of Emma Woodhouse, she was a very, I think you all know that she was a very clever woman, but sometimes misguided young woman who enjoys matchmaking. But कई बार बहुत ज़्यादा misguide हो जाती थी. All right, who enjoys matchmaking, जो matchmaking करना बहुत पसंद करती थी, match बनाना, मतलब जोड़ियां बनाना पसंद करती थी couples की. All right. So let's come to the fifth point, Northanger Abbey, published posthumously, a humorous satire of Gothic novels. All right, ये एक humorous satire है Gothic novels का. Let's come to the sixth point, which is Persuasion, published posthumously, a touching story of second chances in love and the importance of personal judgment. Persuasion published हुई थी posthumously. ये एक टचिंग स्टोरी है क्योंकि एक सेकंड चांस दिया गया था प्यार में एंड इम्पोर्टेंस मींस महत्व दिया गया था पर्सनल जजमेंट. Alright, so let's come to its literary style and themes. Jane Austen's novels are known for. Jane Austen's की नॉवल किस चीज के लिए जानी जाती हैं? Firstly, realistic portrayal of everyday life. Alright, जो उनके realistic portray हैं उनकी डेली लाइफ में. Alright. Secondly, strong and intelligent female characters. वो बहुत मजबूत एंड होशियार फीमेल कैरेक्टर्स हैं. Thirdly, humor, irony, and social satire. Fourthly, themes of love, marriage, family, morality, and social class. Fifthly, clear, elegant, and engaging writing style. So उनका writing style कैसा था? एक तो बहुत clear था, elegant and engaging था, engage करता था बहुत ज़्यादा. All right. So let's come to its conclusion. So in the first point of conclusion, Jane Austen is regarded as one of the most influential novelists in English literature. So जो Jane Austen है वो regard करी जाती है, किस चीज के लिए जानी जाती है कि वो एक पहली most influential novelist थी English literature में. Secondly, her works combine firstly humor, realism, secondly realism, and thirdly deep insight into human nature. So in the second point of conclusion, she tells how her works combine firstly humor,
secondly realism, and thirdly deep insight into human nature, कि बहुत गहरा चले जाना है human nature में. All right. Thirdly, third point of conclusion, through memorable characters, जो उनके memorable characters थे and timeless themes थे. All right. Fourthly, she continues to inspire readers and writers across the world. वो हमेशा से इंस्पायर करती थी अपने रीडर्स एंड राइटर्स को अक्रॉस द वर्ल्ड भी. ऑलराइट, सो लेट्स कम टू द फिफ्थ पॉइंट. हर नॉवेल्स रिमेन क्लासिक्स. जो उनकी नॉवेल्स है वो हमेशा से क्लासिक्स ही रही हैं बिकॉज दे एक्सप्लोर ह्यूमन यूनिवर्सल. उन्होंने एक्सप्लोर करा है ह्यूमन यूनिवर्सल को. सेकेंडली ह्यूमन इमोशंस एंड रिलेशनशिप्स दैट आर स्टिल रेलिवेंट टुडे, जो आज भी रेलिवेंट है. All right. So thank you so much for watching. Do like, share, and subscribe to Literary Insight. So, guys, these questions will help you in making your assignments also, and they will definitely increase your marks in it. And these questions will always help you in your exams also. So please do write it somewhere in your notebooks and you can make notes on it. All right. And you can take screenshots and learn it from there. All right. So प्लीज गाइस टू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब टू इट. आप जितना मुझे मोटिवेट करेंगे दैट वो मुझे बहुत हेल्प करेगा मोटिवेशन के लिए. मैं उतनी ही आगे से आगे वीडियोस भी लाऊंगी लिटरेचर पे एंड पोएट्रीज भी लेके आऊंगी. So do like, share, and subscribe to Literary Insight, and don't forget to press the bell icon. All right. Thank you. Bye bye.